Question number 3. This question is from complex number. It is given that z is equal to minus 3 under root plus iota. This is a complex number. Express z square in the form r e power iota theta. This form of complex number is called an exponential form of complex number where r is positive. Theta lies between minus pi to pi. So first we will take square of this complex number. Z is equal to minus under root 3 plus iota, and then z square becomes minus 3 under root plus iota square. Using identity here, a minus b whole square, we get minus 3 under root whole square plus iota square minus 2 under root 3 iota. This becomes 3, and iota square is negative 1 minus 2 under root 3 iota. Simplifying, we get 2 minus 2 under root 3 iota. This is z square. Now, where r is, this r shows the modulus of the complex number, and theta shows the argument of z square. So first of all, we will find r. R is z square modulus. मॉडुलस होता है रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर. इमेजिनरी पार्ट इज 2 अंडर रूट 3. दिस इज रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इज दिस minus 2 under root 3 whole square root. So simplifying, we get 4 plus 12. This becomes 12. And 16 under root is equal to 4. This means that r modulus of z square is 4. Now we find the argument, which is theta. Theta is argument of z square. Argument of z square, that is tan inverse imaginary part, which is minus 2 under root 3 over 2, which is equal to tan inverse minus under root 3. So from here, basic angle will be, we will ignore this negative sign. We get tan inverse under root 3, which is equal to pi by 3. This is basic angle. Pi by 3 is the basic angle. अब हम z square जो है, z square is 2 minus 2 under root 3. इसकी आर्गन डायग्राम बनाएंगे ताकि हम आर्गुमेंट ऑफ z square फाइंड कर सकें. रियल पार्ट, imaginary part. This point 2 minus 2 under root 3, this lies in the fourth quadrant. Positive 2, negative 2 under root 3. This is the point. This is the argon diagram.
So this is argument. Or this, since the sense of measuring is clockwise, so this angle will be negative. So z square, argument of z square will be negative pi by 3. This is a argument of this complex number z square. So argument of z square is minus pi by 3. So z square will be, we have to find z square in this form, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर हमारे पास 4 है और एंगल इज थीटा इज माइनस पाई बाय 3, सो जेड स्क्वायर विल बी 4 e पावर minus pi by 3 iota. This is the answer. Now move to the next part of this question. The complex number w is such that z scale w is real. Z scale and w both are complex numbers. इनका product जो है is real. And z square over w is equal to 12. Find two possible values of w, giving your answers in this form, exponential form. R is positive and alpha lies between minus pi to pi. Z square w is real. Z square w, product of these two complex numbers, is real. Look at this diagram to understand it. Real part, imaginary part of complex number along y-axis, real part is along x-axis. Z square, product of these two complex number, is real. This is the real axis, or y-axis is the imaginary axis. A real number lies on x-axis. So there are two cases. Suppose we are taking a point on the x-axis. Suppose this is a 4 0. Suppose this is 4 0. इसका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? इसका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा रियल पार्ट इज 4, इमेजिनरी पार्ट इज 0. इसी तरह हम लेफ्ट साइड पे भी ले सकते हैं, इन द नेगेटिव एक्सिस भी हो सकता है. सपोज दिस इज द पॉइंट, लेट दिस इज -4 0, और इसकी आर्गन डायग्राम क्या होगी और इसका पॉइंट क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर इसका होगा -4 + 0 आएगा. On this positive axis angle is 0, but on the negative axis angle is pi. Here the angle is 0 and here the angle is pi. So there are two arguments when the product is real. Argument of z square w is real. This means that either it is 0 if
lies on the positive axis. This is just an example. 4 प्लस अल्टा, ये देखिए रियल पार्ट इज 4, इमेजिनरी पार्ट एक्सेस पे 0 होता है, एक्स एक्सिस पे रियल इमेजिनरी पार्ट इज 0। इसी तरह नेगेटिव एक्सिस पे -4 प्लस 0 आयोटा हो सकता है। तो इन बोथ वेज आइदर एंगल इज 0 और पाई। आर्गुमेंट ऑफ जेड स्केयर डब्ल्यू जो है वो पाई भी हो सकता है। दीज आर टू पॉसिबिलिटीज। फ्रॉम हेयर वी कैन राइट आर्गुमेंट ऑफ जेड स्केयर डब्ल्यू जो होता है ये आर्गुमेंट ऑफ जेड स्केयर प्लस आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू, प्रोडक्ट का जो है वो सम में चेंज होता है आर्गुमेंट। सो वी कैन राइट आर्गुमेंट ऑफ जेड स्केयर प्लस आर्गुमेंट ऑफ w is equal to 0. Argument of z square we have already found, that is argument of z square, that is negative pi by 3। यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस पाई बाय 3 प्लस आर्गुमेंट ऑफ w is equal to 0। फ्रॉम हेयर आर्गुमेंट ऑफ w जो है वो पाई बाय 3 आ जाएगा। इन द सेम वे फ्रॉम हेयर आर्गुमेंट ऑफ w की एक और वैल्यू आ सकती है, आर्गुमेंट ऑफ z square plus argument of w is equal to pi, argument of z square again minus pi by 3 plus argument of w is equal to pi। From here argument of w is equal to pi plus pi by 3, that becomes 4 pi by 3, pi plus pi by 3, that is 4 pi by 3। This is argument of w, but this exceeds the uh, argument since argument lies between minus pi to pi, but this value, this angle exceeds pi, so we can take the other angle, that is negative this angle 4 pi by 3 is 240। 240 एंगल जो है होगा वो यहाँ पे होगा, but this exceeds the argument limit, and sorry, this exceeds the argument uh, range, that is minus pi to pi, so we can take this angle. This angle will be this angle is 240, so this becomes pi minus this angle will be minus 2 pi by minus 2 pi by 3, because we cannot take this angle because it exceeds the argument, so we can take this angle. This is negative 2 pi over 3, so there are two possibilities. So this shows that argument of w
is minus 2 pi by 3। अब हमने इस फॉर्म में दो पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी है W की, R e पावर आयोटा अल्फा। सो R इज, अब हम R फाइंड करेंगे W का, वो दूसरी इक्वेशन दी हुई है z स्क्वायर ओवर W इज इक्वल टू 12। यहाँ से हम इसका मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन। z स्क्वायर ओवर W मॉडुलस इज इक्वल टू 12, इसको हम लिख सकते हैं z स्क्वायर मॉडुलस ओवर W मॉडुलस इज इक्वल टू 12। z square modulus is 4, 4 over modulus of W is equal to 12. So modulus of W is equal to 1 over 3. So this is the modulus of W और these are two arguments। एक argument है pi by 3 argument of W और दूसरा argument of W है minus 2 pi by 3। So finally there are two possible values of W। W is equal to 1 over 3, that is R e पावर आयोटा पाई बाय 3, और दूसरी वैल्यू W की होगी 1 over 3 e पावर -2 pi by 3 iota। So these are two possible values of W।